In this video, we'll discuss about the liquid state, liquid state of matter. In the previous video, we have discussed about the gaseous state of matter. In the previous video, we discussed about the gaseous state of matter. In this video, we will discuss about the liquid state of matter. Because we know that matter exists in three states: gas, solid, and liquid. Gas, liquid, and solids. So this is the we are going to discuss the second state of matter, which is liquid. After that, we will discuss the solid state, and firstly, we have already discussed the gaseous state of matter. So, liquid state is the state of matter in which the intermolecular forces of attraction are stronger than gaseous state. हमने पहले गैसियस स्टेट ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस किया कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में बहुत वीक होती है, जिसकी यानी लिक्विड के मुकाबले में। लेकिन लिक्विड में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है ऑफ अट्रैक्शन है, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये लिक्विड स्टेट में, लिक्विड में स्ट्रॉन्गर होती है ये एज कंपेयर टू गैस। तो ये बता रहा है कि लिक्विड स्टेट वो स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मजबूत होती है, स्ट्रॉन्गर होती है गैसियस स्टेट के मुकाबले में। दिस फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रांगली enough to hold the molecules together, but not so strong to stop the molecular motions. तो लिहाजा जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है स्ट्रॉन्गर इनफ, इतनी मजबूत होती है टू होल्ड द मॉलिक्यूल्स टुगेदर, बट इतनी मजबूत होती है कि वो मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़े रखती है, बट नॉट स्ट्रॉन्ग, लेकिन इतनी भी मजबूत नहीं होती टू स्टॉप द मॉलिक्यूलर मोशन, कि वो मॉलिक्यूल्स की जो मोशन है लिक्विड के अंदर उसको स्टॉप करे। यानी ये एक हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें लिक्विड पड़ा हुआ है, तो लिक्विड में ये जो फोर्स मॉलिक्यूल्स है ये मूवमेंट कर रहे होते, ये कोलाइड भी करते हैं विद द वॉल ऑफ द कंटेनर, लेकिन इनके दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है, लेकिन ये इतनी मजबूत नहीं होती कि इस मॉलिक्यूलों को स्टॉप करे कि वो हरकत ही ना करे ये। लेकिन गैस के मुकाबले में ये इनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो स्ट्रांग होती है, बट सॉलिड्स के मुकाबले में ये कम होती है। सो you can say that liquid molecules have kinetic energy. They move randomly. Liquid molecules have so kinetic energy due to which they move randomly. A liquid therefore passes a fixed volume but no definite shape or form. The surface of a liquid is always leveled. यानी liquid therefore possesses a fixed volume but no definite shape or form. तो liquid जो है ना ये पास हो जाती है, इसकी कोई definite शेप नहीं होती, इसको जिस कंटेनर में डाला जाए उसी कंटेनर की शेप इख्तियार कर लेता है। यानी लिक्विड to put
it will form the shape of the container in which it is poured or put in. So surface of the liquid is always level. लिक्विड का जो surface है वो always level होता है. Now let's come towards the typical properties of liquid. Typical properties of liquid क्या है? Some typical properties of liquids states are, number first one is volume and shape. Liquid has a definite volume but no definite shape. That's why it takes the shape of the container in which it is placed. Liquid has a definite volume. Liquid का एक मखसूस वॉल्यूम होता है but no definite shape. लेकिन उसका कोई मखसूस शेप नहीं होता. That's why जिसकी वजह से it takes the shape of the container in which it is placed. इसी वजह से ये उस कंटेनर का शेप इख्तियार कर लेता है, शक्ल इख्तियार कर लेता है जिसमें उसको डाला जाता है. यानी अगर हम लिक्विड हो, हमारे पास एक कंटेनर है तो इस तरह का है, तो इसमें अगर हम लिक्विड को डालेंगे तो ये जो लिक्विड है ये इस कंटेनर की शक्ल इख्तियार कर लेगा. फॉर एग्जाम्पल ये बीकर है हमारे पास, तो ये ऐसी शक्ल इख्तियार कर लेगा, इसलिए ये लिक्विड है. तो अगर हम इसको किसी फ्लास्क में डाल दें, ये फ्लास्क है हमारे पास, अगर हमने इसी लिक्विड को इसी फ्लास्क में डाला तो ये जो इसी फ्लास्क की शक्ल इख्तियार कर लेगा, यानी इसकी वजह इसकी शक्ल इख्तियार कर लेगा. तो इसको जिस कंटेनर में भी डाला जाए उस कंटेनर की जो है ना शेप इख्तियार कर लेते हैं. सो देयरफॉर लिक्विड has a definite volume but no definite shape. That's why it takes the shape of the container in which it is placed. The second is evaporation. So the molecules of a liquid move with different kinetic energy. The molecules of the liquid whose kinetic energy are higher move faster and overcome the intermolecular attractive force. Those molecules come out of the liquid and convert into gaseous state. So the conversion of liquid state into gaseous state is called evaporation. We can say that the phenomena in which a liquid is converted into vapors without external heating is called evaporation. So यहाँ पर ये बताया गया है कि the molecules of a liquid to move with different kinetic energies. जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मुख्तलिफ काइनेटिक एनर्जी के साथ तो मूवमेंट करते हैं, हरकत करते हैं. The molecules of liquid whose kinetic energy are higher, वो मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है वो फास्टर, वो तेज़ी से हरकत करते हैं एंड ओवरकम और तोड़ देते हैं द इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स. यानी लिक्विड के वो मॉलिक्यूल जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है वो तेज़ी से हरकत करते हैं, मूव करते हैं और वो इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होती है उनको तोड़ देते हैं. तो जिसकी वजह से वो दूज मॉलिक्यूल्स यानी वो मॉलिक्यूल्स कम आउट ऑफ लिक्विड से बाहर निकल जाते हैं एंड कन्वर्ट इनटू गैसियस स्टेट, और गैस ये स्टेट में गैस की हालत में कन्वर्ट हो जाते हैं, तब्दील हो जाते हैं. अच्छा, अब ये यहाँ पर इसकी जो डिफिनीशन है ये बता रहा है यानी उस स्टेट को हम कहते हैं ऑपरेशन. तो इस ऑपरेशन की डिफिनीशन फिर यानी अगर हम ये कहें कि जो लिक्विड की मॉलिक्यूल्स है जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, अगर वो इंटर
मॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करे और वो लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में चले जाए, तो उसको हम कहते हैं ऑपरेशन। तो ऑपरेशन क्या है? कन्वर्जन the conversion of liquid state into gaseous state is called evaporation। यानी लिक्विड स्टेट का गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना, तब्दील होना, इसको एवापोरेशन कहते हैं। सो वी कैन से, हम ये भी कह सकते हैं कि दैट द फिनोमेना, यानी वो फिनोमेना इन विच, जिसमें अ लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू इट्स वेपर्स विदाउट एक्सटर्नल हीटिंग इज कॉल्ड ऑपरेशन। यानी एक तो ये होता है कि हमारे पास एक कंटेनर हो, उसमें यानी कि हमारे पास एक कंटेनर पड़ा हुआ है, तो उसको जो है ना हम, ये हमारे पास एक कंटेनर अगर पड़ा हुआ है, इसमें लिक्विड पड़ा हुआ है, एक 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 को तो हम हीट कर रहे होते हैं, और एक को बगैर हीटिंग के, यानी ये अगर बगैर हीटिंग के कंटेनर पड़ा हुआ है, इसको हम हीट नहीं कर रहे हैं, तो यानी बगैर हीटिंग के लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना, वेपर स्टेट में, इसको कहते हैं एवोपोरेशन। यानी ये एवोपोरेशन है। लेकिन हम अगर इसको हीट नहीं करेंगे तो ये जो है ना, ये इसको कहते हैं एवोपोरेशन विदाउट। सो द फिनोमेना इन विच लिक्विड स्टेट is converted or is converted into vapors without external heating is called evaporation। इसको कहते हैं evaporation। यहाँ पर ये दिखाया गया है evaporation क्या चीज़ है। यहाँ पर अगर हम देखें process of evaporation, figure 5.10, evaporation ये liquid पड़ा हुआ है, इससे liquid, so liquid molecules, for example it's water molecules, and these are moving up. And you can say that these water molecules are here in the liquid form, but some kinetic energy of the liquid molecules or water have high energy, so they overcome the intermolecular attraction due to which they are converted into the vapor state। यानी लिक्विड स्टेट से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो वेपर स्टेट में चले जाते हैं विदाउट एनी हीटिंग। दिस इज कॉल्ड ऑपरेशन, इसको ऑपरेशन कहते हैं। सो you can say operation takes place at all temperature। ऑपरेशन सारे टेम्परेचर्स पे होता है when the molecules of higher kinetic energy are converted into the gaseous state and escape into the atmosphere, the temperature of the remaining liquid falls। That's why evaporation causes cooling। तो यहाँ पर ये बताया गया कि ये ऑपरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर, सारे टेम्परेचर पे ऑपरेशन होते हैं। when the molecules of the high kinetic energy, जो हाई काइनेटिक एनर्जी की जो मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड के, जब कन्वर्टेड, जब चेंज करते हैं इसको इनटू गैसियस स्टेट में, एंड एस्केप इनटू द एटमॉस्फेयर, और वो एटमॉस्फेयर की तरफ निकल जाते हैं, तो द टेम्परेचर ऑफ द रिमेनिंग लिक्विड, यानी जो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका टेम्परेचर जो है ना वो डाउन हो जाता है, फॉल हो जाता है, जिसकी वजह से दैट्स वाई ऑपरेशन काजेस कूलिंग, जिसकी वजह से ऑपरेशन की वजह से फिर कूलिंग वाक़ई हो जाती है। यानी कि जैसे हमने पहले डिस्कस किया, हमारे पास ये जो है लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये अगर ये ऊपर जाएंगे तो ये ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी के, तो जो रिमेनिंग यानी जो लिक्विड फॉर्म में ये वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका टेम्परेचर डाउन हो जाता है, इनका टेम्परेचर डाउन हो जाता है, इनका टेम्परेचर डाउन हो जाता है।
जब ये इवेपोरेट हो जाती है हाई काइनेटिक एनर्जी की मॉलिक्यूल, तो ये रिमेनिंग जो लिक्विड होती है इनका टेम्परेचर डाउन हो जाता है, यानी ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह से ये कूलिंग भी पैदा करते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि इवेपोरेशन इवेपोरेशन causes कूलिंग, यानी जब लिक्विड इवेपोरेट होता है तो बाकी जो रिमेनिंग लिक्विड होता है वो ठंडा हो जाता है। सो the evaporation depends on following factors. Evaporations का निसार किन फैक्टर्स पर होता है? नंबर एक, surface area. The process of evaporation takes place from the surface. Greater the surface area, higher will be the rate of evaporation and vice versa. ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई लिक्विड पड़ा हुआ है किसी कंटेनर में, और उस कंटेनर का जो सरफेस एरिया है, मिसाल के तौर पर हमारे पास ये कंटेनर पड़ा हुआ है, इसका सरफेस एरिया है, इसका हमारे पास ये कंटेनर पड़ा हुआ है, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो ये जो इसमें लिक्विड पड़ा हुआ है इसमें पड़ा हुआ है, तो ये कह रहे हैं कि द प्रोसेस ऑपरेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम द सरफेस। ऑपरेशन यहाँ से होगी, यहाँ से भी होगी, यहाँ से भी होगी। ग्रेटर द सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया ये ज़्यादा है, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। हायर विल बी दी रेट ऑफ एवपोरेशन, यानी जिस कंटेनर का अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो वहाँ पे रेट ऑफ एवपोरेशन ज़्यादा होगी। जैसे इस कंटेनर से ज़्यादा होगी रेट ऑफ ऑपरेशन, और इस कंटेनर का सरफेस एरिया कम है, तो लिहाजा इससे ऑपरेशन कम होगी एज कम्पेयर टू दिस कंटेनर। सो नेक्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर। With the increase in temperature, the average kinetic energy of the liquid molecule increases, so the rate of evaporation increases. अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स बढ़ेगी, जिसकी वजह से एवापोरेशन का जो रेट है वो बढ़ेगा। यानी जब हम किसी कंटेनर में, अगर इस कंटेनर का अगर हम इसको गर्म करेंगे, इसको अगर हम हीट अप करेंगे, तो ये इसकी जो रेट ऑफ एवपोरेशन है वो बढ़ेगी एज कंपेयर टू द अदर कंटेनर which are not heated. So टेम्परेचर बढ़ाने से एवपोरेशन बढ़ता है। नंबर सी, थर्ड वन, is the you can say this is the intermolecular forces. The evaporation of the liquid depends upon the intermolecular forces. We can say that evaporation of the liquid depends on intermolecular forces. लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है, evaporation का इन्हिसार भी उन पर होता है। Stronger the intermolecular forces, slow will be the rate of evaporation and vice versa. अगर उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो लिक्विड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होगी, अगर ये स्ट्रांग होगी तो रेट ऑफ एवपोरेशन स्लो होगा, रेट ऑफ एवपोरेशन स्लो होगा, क्योंकि if we are going to increase the rate of intermolecular forces, which will be stronger, then the rate of evaporation will be weaker, because the intermolecular forces will not allow the water molecules to escape from the liquid surface. Therefore, rate of evaporation will be lower. यानी अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ेगी उसमें, तो वो वाटर मॉलिक्यूल्स को आगे एवोपरेट होने से बचाएगा, जिसकी वजह से रेट ऑफ एवोपरेशन कम होगी।
डिफरेंट लिक्विड्स हैव डिफरेंट रेट ऑफ ऑपरेशन। मुख्तलिफ लिक्विड जो होती है उनकी ऑपरेशन का जो रेट है वो भी मुख्तलिफ होता है सेम टेम्परेचर पे, बिकॉज द अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डिफरेंट इन डिफरेंट लिक्विड्स। मुख्तलिफ लिक्विड्स में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो मुख्तलिफ होता है, सेम नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर वाटर है स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस देन अल्कोहल। पानी में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होती है, ज़्यादा होती है अल्कोहल के मुकाबले में। तो इसलिए देयरफॉर अल्कोहल एवापोरेट्स सो क्विकली देन वाटर। अल्कोहल जल्दी इवापोरेट होता है पानी के मुकाबले में, क्योंकि अल्कोहल के जो मॉलिक्यूल्स है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती है पानी के मुकाबले में, वाटर के मुकाबले में, जिसकी वजह से अल्कोहल के मॉलिक्यूल जल्दी इवापोरेट हो जाते हैं। और पानी के मॉलिक्यूल्स में फोर्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो कम या स्लोली इवापोरेट होते हैं अल्कोहल के मुकाबले में। सो next one is vapor pressure. The vapor pressure exerted by the vapors of the liquid when the rate of evaporation become equal to the rate of condensation is called vapor pressure। यानी कि प्रेशर जो वेपर्स और लिक्विडों के ऊपर लगाते हैं, जब रेट ऑफ एवापोरेशन बराबर हो जाए, बिकम इक्वल रेट ऑफ कंडेंसेशन के, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं इसको कहते हैं वेपर प्रेशर। यहाँ पर हमारे पास ये लिक्विड है, दिस लिक्विड we have in a closed container. This is the, it's a closed container, it's a closed container, it's a closed container। तो इस closed container में आप देखिए कि जो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाले ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एवोपरेट हो रहे हैं, यहाँ से एवोपरेट हो रहे हैं, यहाँ से एवोपरेट हो रहे हैं लिक्विड सरफेस से। तो ये एवोपरेट हो रहे हैं यहाँ पे, तो ये क्या करते हैं, ये इसके ऊपर प्रेशर लगाते हैं। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स टू लिक्विड हो, तो ये यहाँ पर क्या करेंगे, प्रेशर यहाँ पे लगाते हैं इन वाटर सरफेस के ऊपर। तो जब ये जो है ना वेपर लिक्विड जोन, इसकी ऑपरेशन का जो रेट है ये बराबर हो जाए कंडेंसेशन के, तो उस पॉइंट को कहते हैं वेपर प्रेशर। इसको हम आगे बढ़ते हैं। When a liquid is placed in a closed container, ये लिक्विड हमने इसको closed container में रखा हुआ, the kinetic energy of all the molecules is not the same। काइनेटिक एनर्जी सारे मॉलिक्यूल्स की सेम नहीं होती। The molecules of the liquid zone, whose kinetic energy is greater than the average zone, यानी वो मॉलिक्यूल जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, जो हमने पहले पढ़ा है, come to the liquid surface, वो यहाँ पर लिक्विड सरफेस में करीब आ जाते हैं, जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, यहाँ पर करीब आ जाते हैं। एंड आर कन्वर्टेड इनटू वेपर्स, और फिर ये आगे वेपर्स में ये कन्वर्ट हो जाते हैं, ये जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं। इवोपरेशन अगर, यानी कि इवोपरेशन वाक़या हो जाती है। तो द वेपर्स गैदर इन द स्पेस अबव द सरफेस ऑफ द लिक्विड, ये यहाँ पर जमा हो रहे हैं वेपर्स क्लोज कंटेनर में, एंड प्रोड्यूसेस अ वेपर प्रेशर, ये वेपर प्रेशर पैदा कर रहे हैं। सम ऑफ द वेपर मॉलिक्यूल्स स्ट्राइक बैक टू द सरफेस ऑफ द लिक्विड, कुछ वेपर मॉलिक्यूल होते हैं वो इस सरफेस लिक्विड के ऊपर बैक प्रेशर डालते हैं, प्रेशर प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि ये इनकी सरफेस से टकरा रहे होते हैं लिक्विड की सरफेस से।
लूज, सो देयरफॉर लूज देयर एनर्जी, ये एनर्जी को लूज करते हैं एंड बिकम लिक्विड अगेन, और ये फिर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में वी कैन से द कंडेंसेशन टेक्स प्लेस, तो इस सूरत में कंडेंसेशन वाक़या हो जाती है। यानी अब यहाँ पर इस द रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीजेस द रेट ऑफ कंडेंसेशन आल्सो इंक्रीजेस, रेट ऑफ एवापोरेशन बढ़ने के साथ साथ रेट ऑफ कंडेंसेशन भी बढ़ता है। स्टेट इज रीच्ड where the rate of evaporation become equal to the rate of condensation, एक स्टेज आता है जहाँ पे रेट ऑफ जो evaporation है, रेट ऑफ evaporation जो है इसकी कंडेंसेशन के बराबर हो जाती है। तो वो जो स्टेज होता है द रेट इज कॉल्ड, उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट, यानी वो स्टेट जिसमें लिक्विड वेपर्स में और फिर वेपर्स दोबारा कंडेंस होके लिक्विड में, तो इसको अब देखिए यहाँ पर ये जो है ना, यहाँ पर ये ऑपरेशन हो रही है, लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, फिर वेपर्स अगर दोबारा लिक्विड फॉर्म में आ जाए तो इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। तो यहाँ पे इन एक स्टेज पे ये जो रेट है ये बराबर हो जाता है, यानी रेट ऑफ कंडेंसेशन ऑपरेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन ये बराबर हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट, ये इक्विलिब्रियम स्टेट है। Therefore, the vapor pressures can be defined as, vapor pressure को हम कैसे डिफाइन करेंगे, the pressure exerted by the vapors of a liquid in equilibrium state। वेपर प्रेशर को फिर हम कैसे डिफाइन करेंगे, द प्रेशर, वो प्रेशर जो लगाते हैं वेपर जो लिक्विडों के ऊपर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ ए लिक्विडों इन इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट में जो प्रेशर लगाते हैं वेपर जो लिक्विड के ऊपर, उसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर, उसको वेपर प्रेशर कहेंगे। और नेक्स्ट वन इज factors affecting vapor pressure। The vapor pressure of liquid doesn't depend upon the amount of liquid or surface area of liquid but depends on the following factors। वेपर प्रेशर जो लिक्विड का होता है वो अमाउंट ऑफ लिक्विड के ऊपर इन्हिसार या सरफेस एरिया के ऊपर इन्हिसार नहीं करता, ये बल्कि इन जो इनको जो बिलो जो फैक्टर्स इनके ऊपर डिपेंड करते हैं। द फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ लिक्विड। द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द लिक्विड। Polar liquids have higher boiling points and exert little pressure at a given temperature, while non-polar liquids have low boiling point, low boiling liquids and exerts more vapor pressure at the same temperature. For example, water has less vapor pressure than that of acetone at same temperature। तो ये कहते हैं कि नेचर ऑफ लिक्विड में भी वेपर प्रेशर का इन्हिसार होता है। नेचर ऑफ लिक्विड पे इनका डिपेंड करता है जो वेपर प्रेशर है, नेचर ऑफ लिक्विड। पोलर लिक्विड जो होते हैं, पोलर लिक्विड्स हो उनका बॉइलिंग पॉइंट हो हाई बॉइलिंग पॉइंट्स, हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट्स। पोलर जो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है तो वो क्या करते हैं, एक्सर्ट लिटिल प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर। पोलर लिक्विड जो होती है उनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है और वो ज़्यादा वेपर प्रेशर लगाते हैं, जबकि जो नॉन पोलर लिक्विड होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, तो वो ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं सेम टेम्परेचर में, उसी सेम टेम्परेचर पे।
यानी पोलर लिक्विड जोन लिटिल प्रेशर लगाते, कम प्रेशर लगाते हैं क्योंकि वो पोलर होते हैं, और जो नॉन पोलर होते हैं वो कम प्रेशर लगाते हुए लिक्विड के ऊपर क्योंकि उनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। मिसाल के तौर पर जो पानी है, वाटर है, वो अ, उसका वेपर प्रेशर कम होता है एसीटोन के मुकाबले में। तो उसके बाद है intermolecular forces. The stronger the intermolecular attractive forces in liquid, lesser will be its tendency to evaporate. So lesser will be its evaporation, its vapor pressure at a given temperature. For example, the vapor pressure of ethyl alcohol is higher than that of water because in water the intermolecular forces are stronger than ethyl alcohol at the given temperature. Intermolecular forces. So अगर हम इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं उसको हम लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में बढ़ाएंगे, स्ट्रॉन्गर करेंगे, तो क्या होगा? इवोपरेशन का चांस कम होगा। यानी लिक्विड हमारे पास पड़ा हुआ है, अगर हम इसके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है उसको इंक्रीज करेंगे तो इवोपरेशन का जो चांस होगा वो कम होगा। तो लिहाजा अगर हम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन ज़्यादा जिस लिक्विड में होंगे उनकी रेट ऑफ एवोपरेशन कम होगी, तो लिहाजा वेपर प्रेशर भी कम होगा उनका। मिसाल के तौर पर वेपर प्रेशर ऑफ इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, हायर होता है। इसकी वजह ये है कि वाटर के मुकाबले में, पानी के मुकाबले में, इसकी वजह ये है कि वाटर में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है वो स्ट्रांगर होती है, और इथाइल अल्कोहल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती है, जिसकी वजह से इथाइल अल्कोहल का जो वेपर प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू वाटर। सो नेक्स्ट वन इज द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स। यानी जो लिक्विड के मॉलिक्यूल है उनका साइज अगर कम या ज़्यादा है तो उनका क्या फर्क पड़ता है? The size of those liquids which have small size are easily evaporated than those liquids which have large size. अगर हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें लिक्विड पड़ा हुआ है, तो जिन मॉलिक्यूल्स का साइज बड़ा होगा वो स्मॉलर साइज के मॉलिक्यूल्स होंगे वो जल्दी ऑपरेट होंगे, तो बिगर मॉलिक्यूल्स वो स्लोली ऑपरेट होंगे। यानी स्मॉलर साइज के मॉलिक्यूल है वो जल्दी ऑपरेट होंगे। So the liquids which have smaller size are easily evaporated than those liquids which have larger size. The smaller, the small sized molecules liquid form more vapor pressure than the big size liquids at the same temperature. For example, जो pentane है, pentane has a small size molecule than decane. So therefore, pentane vaporizes rapidly and exert more pressure than decane at the same temperature. यानी कि मॉलिक्यूल्स का अगर साइज बड़ा है, बिग है, और एक छोटा है,
तो छोटे मॉलिक्यूल्स जो है ना वो जल्दी ऑपरेट होंगे इस कंपेयर टू बिग हो, तो लिहाजा वो क्या करेंगे, वो मोर प्रेशर बनाएंगे, यानी ये जो स्मॉल साइज मॉलिक्यूल है वो ज़्यादा प्रेशर बनाएंगे, वेपर प्रेशर बनाएंगे बड़े मॉलिक्यूल साइज के मॉलिक्यूल्स के मुकाबले में, क्योंकि मिसाल के तौर पर जो पेंटेन है इसका साइज जो है ना ये छोटा है डिकेन के मुकाबले में, क्योंकि इसमें 10 कार्बन एटम्स है और इसमें जो है ना 5 कार्बन एटम्स है पेंटेन में, तो लिहाजा इसका साइज छोटा है और डिकेन का ज़्यादा है, तो ये जो पेंटेन है ये ज़्यादा प्रेशर लगाएगा लिक्विड के ऊपर, ज़्यादा वेपर प्रेशर बनाएगा, तो एज कंपेयर टू डिकेन। सो आगे कुछ टेबल है, table is given some compounds with their vapor pressures. This is chloroform. This is formula CCl3, and vapor pressure at 298 degree Kelvin or 25 degrees Celsius at 1 mmg Hg, mm of water, mm of mercury. This is 25 degrees centigrade and 1 mm of mercury. Its vapor pressure is 170. Carbon tetrachloride is the vapor pressure of 87, CCl4, water H2O is the vapor pressure of 18, while that of glycerol is the vapor pressure 0.0016. So this is the vapor pressure of some compounds given below in this table. Next one is temperature. Increase in temperature of a liquid increases the average kinetic energy of the liquid molecules. The intermolecular distance among the molecules of a liquid increases, which causes decrease in the intermolecular attractive forces between the liquid molecules. Hence, the rate of evaporation of the liquid increases, and thus vapor pressure increases. ये कह रहे हैं कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा लें, इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा लें लिक्विड का, तो इससे क्या होता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल जो कि लिक्विड मॉलिक्यूल होती है वो ज़्यादा हो जाती है, तो उससे क्या होता है, तो द इंटरमॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस होता है वो बढ़ जाता है, यानी अगर ये हमारे पास एक कंटेनर उसमें टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो फिर ये जो डिस्टेंस है वो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में वो बढ़ जाता है, तो जिसकी वजह से विच causes decrease in intermolecular attraction, और जिस डिस्टेंस बढ़ जाती है तो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन अट्रैक्टिव फोर्सेस वो कम हो जाती है लिक्विड मॉलिक्यूल्स के दरमियान में, बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स, तो जिसकी वजह से रेट ऑफ एवापोरेशन ऑफ लिक्विड बढ़ जाता है, सो वेपर्स प्रेशर जो है ना साथ बढ़ जाता है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स increases. So when the average kinetic energy of the molecules of the liquid increases, the distance, intermolecular distance among the molecules of the liquid increases, which will results in decrease in intermolecular attraction between the liquid molecules, due to which the rate of evaporation of liquid increases, and thus vapor pressure increases. अगर हम इस कंटेनर को हीटअप करेंगे तो ये जो जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो डिस्टेंस होगा वो बढ़ेगा बढ़ेगा, तो
बढ़ने से ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होगी, तो जिसकी वजह से ये जो मॉलिक्यूल है जल्दी इवापोरेट होंगे, रेट ऑफ ऑपरेशन बढ़ेगा और इससे क्या होगा, वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा। सो टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ेगा। नेक्स्ट वन इज boiling point. When the liquid is heated on, the kinetic energy of the liquid molecule increases, which increase in vapor pressure of the liquid. जब हम लिक्विड को गर्म करेंगे तो क्या होगा, एनर्जी ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स बढ़ेगा, विच इंक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, जो वेपर प्रेशर को बढ़ाएगा। अगर हम इसको जिस तरह ये हम इसको हीटअप कर रहे हैं इस लिक्विड को, तो इसको हीटअप करने से इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसके दरमियान में, मॉलिक्यूल्स के दरमियान में, वो काइनेटिक एनर्जी वो इंक्रीज होगी। तो काइनेटिक एनर्जी जब इंक्रीज होगी तो वो वेपर प्रेशर को बढ़ाएगा, प्रेशर को बढ़ाएगा। उसके बाद a time is reached, एक टाइम एक स्टेप आता है when the vapor pressure of the liquid become equal to the atmospheric pressure, external pressure। यानी इस लिक्विड को जब हम हीटअप करेंगे कंटिन्यूसली तो एक स्टेप आता है जिसमें जो वेपर प्रेशर होता है वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है। एक्सटर्नल प्रेशर और यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसको हम बोलते हैं, इसके बराबर हो जाता है, जिसमें वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर। एट दिस स्टेज, इस स्टेज पे the liquid begins to boil, boil होना शुरू हो जाता है, and small bubbles of liquid go to the surface of the liquid where they burst and vapors are released into the atmosphere। यानी इस पॉइंट पे जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सरफेस के पास बर्स्ट हो जाते हैं, फट जाते हैं और वो आगे वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, आगे एटमॉस्फेयर में इनको रिलीज हो जाते हैं। सो कहते हैं कि द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, the temperature at which the vapor pressure of a liquid become equal to the atmospheric pressure at any external pressure is called boiling point। यानी वो टेम्परेचर जिस पे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, उसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, ये वो पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट, यानी वो पॉइंट जिसमें जो वेपर प्रेशर है ऑफ लिक्विड ये एक्सटर्नल प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। During boiling, the temperature of the liquid remained constant। Boiling point का जो स्टेज है वहाँ पे temperature of the liquid remains constant because the heat provided to the liquid during boiling is used to overcome intermolecular attractive forces of liquid molecules। यानी
जो बॉइलिंग का स्टेज है वहाँ पे टेम्परेचर लिक्विड जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, क्योंकि वो जो हम हीट सप्लाई कर रहे होते हैं वो अ, जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस है उनको ख़त्म करने में इस्तेमाल होती है, जिसकी वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो टेम्परेचर है लिक्विड का वो कांस्टेंट रहता है. So the boiling point of liquid depends on the following factors. Number first one, nature of liquid or intermolecular force. Polar liquids have higher boiling point than that of non-polar liquid. In polar liquids, there are strong intermolecular forces of attraction than non-polar liquids. So therefore, polar liquids have higher boiling point. Have you seen that? You can say that this is vapor pressure and it's temperature. So boiling point, different liquids are given here. Let's say this is water which is boiling point 100 degree Celsius, and this ethyl alcohol which has boiling point this 17.3, and this is the diethyl ether which is boiling point 34.5. So this is the comparison of boiling points of some liquids. Intercomparison. Second one is external pressure. Boiling point of liquid depends on the external pressure. With the increase in external pressure, the boiling point also increases. Similarly, the decrease in external pressure causes decrease in boiling point. बॉइलिंग पॉइंट का इंसार एक्सटर्नल प्रेशर के ऊपर भी होता है. अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा. अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर को कम करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा. At high altitude, hilly areas, the boiling point of liquid will be less because the external pressure is lower. Therefore, the water boils at lower temperature than 100 because the atmospheric pressure is less than 760 mm of mercury. The EVQ distillation is based on the decrease in boiling point, the decrease in external pressure. While the increase in external pressure, the boiling point of a liquid also increases. The pressure cooker works on this principle. So we can say that the boiling point of liquid depends on external pressure. By increasing the external pressure, the boiling point also increases. Similarly, the decreases in external pressure causes decrease in the boiling point. At high altitude, hilly area, if you're living in a hilly area, if we are working in hilly areas, the boiling point of liquid will be less
because the external pressure is lower. हिली एरिया में जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लिक्विड का लो होता है क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर लो होता है, जिसकी वजह से पानी जो है वो वाटर बॉइल्स एट लो टेम्परेचर, पानी कम टेम्परेचर पे बॉयल होते हैं क्योंकि हिली एरिया में एक्सटर्नल प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। 100 से नीचे टेम्परेचर पे ये पानी बॉयल होता है because the atmospheric pressure is less than 760 mm of mercury. We can say the 760 mm of mercury, that is equal to 1 atmosphere. तो हिली एरिया में ये टेम्परेचर, ये प्रेशर जो है ये कम होता है 1 एटमॉस्फेयर से, जिसकी वजह से पानी 100 से नीचे बॉयल करता है। The vacuum distillation is based on the decrease in the boiling point. The decrease in external pressure, well, with the increase in external pressure, the boiling point of a liquid increases. Pressure cooker works on this principle. Next one is freezing point. When liquid is cooled, the kinetic energy of the liquid molecules decreases, so the vapor pressure of the liquid also decreases. By decreasing the atmospheric, by decreasing the temperature, further a stage is reached when the vapor pressure of the liquid state becomes equal to the vapor pressure of the solid state. The temperature at which the liquid and solid state exist in equilibrium state is called freezing point of that liquid. तो ये कह रहे कि लिक्विड इज कूल्ड, जब हम किसी लिक्विड को ठंडा करेंगे तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी लिक्विड मॉलिक्यूल्स की वो कम होगी, डिक्रीज होगी। तो जब ये डिक्रीज होगी तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। अगर हम टेम्परेचर को कम करें मजीद तो एक स्टेज आएगा जहां पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बराबर होगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट के। तो ये टेम्परेचर हो जिसपे लिक्विड और सॉलिड्स दोनों स्टेट एग्जिस्ट करें यानी इक्विलिब्रियम में हो, तो इसको कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। यानी अगर हम किसी लिक्विड को ठंडा करते हैं तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की वो कम होती है, तो जिसकी वजह से वेपर प्रेशर भी कम होता है। और अगर हम मज़ीद उस टेम्परेचर को कम करें तो एक स्टेज आ जाता है जिसकी जहाँ पे वेपर प्रेशर जो लिक्विड का होगा वो वेपर प्रेशर सॉलिड के बराबर होगा। तो वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड और सॉलिड इक्विलिब्रियम स्टेट में होते हैं उसको कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। In this table, freezing point and boiling point of some liquids is given. So this is solvent water. So formula is 2O. That's a freezing point 0.0 and a boiling point 100. Acetic acid. Second one is acetic acid C3CWH, which is a freezing point 17 degrees Celsius and boiling point
118.1 degrees Celsius. Third one is benzene, which is formula C6H6 and has freezing point 5.5 degrees Celsius and boiling point 80.2 degree Celsius. Fourth one is phenol C6H5OH, which is a freezing point 43 and boiling point 181. Now fifth one is chloroform CeCl3, which has a freezing point minus 63.5 and boiling point 61.2. And number 6 is ethanol C2H5OH, which has freezing point minus 114.7 degrees Celsius and boiling point 78.4 degree Celsius. The next one is diffusion. Diffusion can also happen in liquids. This is because the particles in liquids are in continuous state of motion. The molecules of liquid move from higher concentration to low concentration, so the molecules of liquid mix up with the other liquids and form a homogeneous mixture. For example, if you drop a little bit uh, of ink into a glass of water, the ink will spread slowly throughout the water. So this is the diffusion. We can say that diffusion also happen in liquids because the particles of liquids are in continuous state of motion, uh, and in diffusion, molecules move from high concentrations towards uh, low concentration. This is molecules which are in high concentrations, and this is molecules of low concentration. So this molecule will move from this towards this in order to attain an equilibrium. So this is called diffusion. Here is given an example. If we have a paper which is given, if we have income, so this one, so income, so drop of ink. If we drop into this liquid, after some time, this income ink will spread through the liquid, and finally a homogeneous mixture will formed due to this occur due to diffusion. This is called diffusion, which molecules of a liquid move from uh, low concentration towards uh, high concentration. So this is due to diffusion. Because in ink drop, molecules of ink are in high concentrations, so well in this area the molecules of ink are in low concentration, so this will move from this towards this all area, and finally it will form a homogeneous mixture. This is called this is due to diffusion. This is called diffusion. So here we seen that say that ink is dropped in, and diffusion begins in the second stage, and in the third stage, ink is evenly distributed. This is evenly distributed. So this is the diffusion of liquid.
Diffusion in liquids is slower than diffusion in gases because the molecule in liquid move more slowly than gas molecules. The rate of diffusion increases with increasing temperature. The increase in temperature increases the kinetic energy of liquid molecules, so the rate of diffusion increases. डिफ्यूजन लिक्विड में स्लो होती है गैस के मुकाबले में क्योंकि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल है वो गैस के मॉलिक्यूल के मुकाबले में स्लोली मूव करते हैं हरकत करते हैं तो रेट ऑफ डिफ्यूजन अगर हम टेम्परेचर बढ़ा लें तो रेट ऑफ डिफ्यूजन टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने से डिफ्यूजन बढ़ता है सो टेम्परेचर बढ़ाने से क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल जो होती है वो बढ़ती है तो जिसकी वजह से रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बढ़ता है मोबिलिटी the kinetic theory of matter says that liquids consist of molecules which are constantly moving or in a constant state of motion. This mobility of molecules depends on the energy of the molecules. Greater the kinetic energy, the higher will be the mobility of the molecules and vice versa. For example, when we increase the kinetic energy, temperature of the liquid, so the mobility, fluidity of the liquid increases. So, kinetic theory of matter, which say that liquid consists of molecules which are constantly mobility of molecules depend करता है एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर अगर हम किनेटिक एनर्जी बढ़ाएंगे तो मोबिलिटी ज़्यादा होगी हायर विल बी द मोबिलिटी द मॉलिक्यूल्स इस तरह कम करेंगे एनर्जी तो मोबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स कम होगी मिसाल के तौर पर जब हम काइनेटिक एनर्जी यानी टेम्परेचर बढ़ाते हैं इंक्रीज करते हैं लिक्विड का तो मोबिलिटी भी इंक्रीज होती है यानी बढ़ती है नेक्स्ट वन इज डेंसिटी density is mass per unit volume. Liquids have higher densities than gases because in liquids the molecules are close to each other as compared to gases. Liquids molecules have stronger intermolecular forces than gases, hence they cannot expand and have fixed volume. Density. Density is mass per unit volume. Liquids have higher densities than gases. Density जो है ये मास पर यूनिट वॉल्यूम को डेंसिटी कहते हैं लिक्विड में डेंसिटी ज़्यादा होती है क्योंकि लिक्विड में मॉलिक्यूल्स क्लोज होते हैं करीब होते हैं दूसरे के और गैसेस के मुकाबले में जो लिक्विड के मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे से करीब होते हैं और लिक्विड में जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो स्ट्रांग होती है एज कम्पेयर टू गैसेस तो जिसकी वजह से लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स है वो एक्सपेंड नहीं होते और एक फिक्स वॉल्यूम में रहते हैं जिसकी वजह से डेंसिटी ज़्यादा होती है लिक्विड्स की गैसेस के मुकाबले में So here given the density of various liquids, the acetone has density gram per cubic centimeter 0.792, temperature 20. Ethyl alcohol density 0.791 at 20 degrees centigrade.
Methyl alcohol has density of 0.810 gram per cubic centimeter. Olive oil has 0.918 at 15 degrees Celsius. Castor oil has 0.969 at 15 degrees Celsius. Uh, Linseed oil has 0.942 gram per cubic centimeter at 15 degrees Celsius, while water has density 1.00 gram per cubic centimeter at 4 degrees Celsius. Uh, Next video we will discuss about the solid state. So thanks for watching.